Sir, a very warm welcome on Ymedia. How are you? Thank you very much for having us. सबसे पहले तो सत श्री अकाल, नमस्ते आपके व्यूअर्स के लिए and thank you for having us. Thank you. मैं दर्शकों की जानकारी ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ just for viewers benefit. ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ he is the lead investigator at Ontario Securities Commission. ਅਸੀਂ OSC ਜੋ ਲੋਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ OSC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ Ontario Security Commissions what does it stand for ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਕੈਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਇੱਧਰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਗੈਟ ਲੋਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਨਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ राज जी with us, so I'll ask him a question और मैं इस मौके से स्वागत करना चाहना है Chris Alam. Chris, a very warm welcome on Ymedia. How are you? I'm fine. Thank you very much for inviting us to come speak today. Thank you so much, Chris. She's a senior advisor, investment engagement and stakeholder partnerships at the Ontario Securities Commission. So we have two very important distinguished guests over here. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ that's the format of Ymedia as well. We use all these languages. Anybody can use Hindi, Punjabi, Urdu or English. Any of the four languages. I wish I knew more languages. But that's all I know. You know, sometimes I think should I learn French, Spanish. Have you ever tried French or Spanish? Bonjour, that's it. That's it, bonjour, that's it. That's it, bonjour. That's my French. then that qualifies me for Italian. Ciao. Raji, I'll start with you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦੱਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ OSC ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਸਟ ਫॉर अ कॉमन मैन ਉਹਦਾ ਕੀ मैंडेट है स्कोप किया प्लीज गो अहेड आप बताएं तो Ontario Securities Commission जो है वो Ontario गवर्नमेंट का क्राउन कॉर्पोरेशन है हमारा एक आर्म्स लेंथ एजेंसी है जो ओवरसी करता है कैपिटल मार्केट्स ओंटारियो का और हमारा मेन काम जो है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ताकि हम रूल्स बना सके टू प्ले फेयर इन द मार्केट and also to make sure that people are playing by the rules, right? So that's our key mandate. Investor protection is the central mandate of the OSC. And we also want to make sure that people who are taking part in the market, the capital markets in Ontario, have a system that they can abide by, rules that they can abide by, so that investors are protected. So that's the key mandate of the OSC. We're associated with the Ministry of Finance, with the Ontario government as a crown corporation. So aapke listeners ko government ka pata hoga aur the key feature for OSC is for your listeners is we oversee the rules to make sure that the capital markets remain fair, secure and thriving. Great. And Chris, if you could also explain what do you do at OSC? So at the OSC, we have an education and outreach program, and this is where we share information with investors, with the public, because we want them to make more informed decisions for themselves. So actually my role at the OSC is community outreach. I work with many community groups, many organizations to share information, in particular information about fraud prevention, which we're talking about today. All right. Raji, being in media, we get a lot of calls, off the air, जिसमें हमें कहते हैं, they tell us कि fraud हो गया हमारे साथ, आप इसको मीडिया पे हाईलाइट करें. So we get, but I want to ask you कि फ्रॉड वाकई बहुत ज़्यादा है कम हो रहा है क्योंकि आपके पास तो कुछ नंबर्स भी होंगे कुछ स्टैट्स भी होंगे सो आपको क्या लगता है कि बहुत मिनिमाइज होता जा रहा है या उतना की है या ज़्यादा हो रहा है नहीं फ्रॉड तो देखिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉड तो बढ़ता ही जा रहा है अच्छा। जैसे कि कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर जो ट्रैक करता है नंबर्स कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर से ऐसा पता चला है कि 2024 में more than $500 million have been lost just to investment fraud तो फ्रॉड जो चीज़ है जैसे कि आपका इफ़ यू आर विक्टिम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड
आपको एम्बेरस भी होता है रिपोर्ट करने में, आपको शर्म भी आती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं किसी को बताऊँ ना ऐसा होता है. तो इट्स अ वेरी अंडर रिपोर्टेड क्राइम बिकॉज people don't want to talk about it. People don't want to make sure that other people realize that it's a fraud, right? So, हमारा जो काम है, हम जो करने आए हैं आज बताने के लिए कि fraud tips and resources है, ये ज़्यादा important हो जाता है क्योंकि people should know the warning signs of the fraud, जो कि they have to realize that themselves. क्योंकि हमारा काम हम करते हैं पर लास्ट में पैसे हमारे नहीं है, पैसे आपके खुद के हैं. आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपको वार्निंग साइंस देख के आपका गार्ड यू हैव टू हैव योर गार्ड अप, राइट? तो दैट्स आवर मेन पर्पस ऑफ बीइंग हियर, क्योंकि आपके लिसनर्स जो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, दे हैव टू मेक देयर ओन डिसीजंस अबाउट देयर ओन मनी, just like you have to make decisions about what to advertise, what not to advertise on your program, right? And that's where the warning signs come in. If you're promised high returns with little to no risk, if you're getting an insider information or a hot tip, or if you're working with someone, or if you're soliciting investments who is not registered with the OSC, those are big warning signs, right? And if it's an investment that you don't understand, जैसे कि हम क्रिप्टो की बात करें और जैसे नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, अगर आपको नॉलेज ना हो इन्वेस्टमेंट का कि क्या है क्या नहीं है, आप टाइम लें, आप थोड़ा रिसर्च करें, आप समझें इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि पैसे चले गए, then the issue is once the money is gone, it's most of the times it's gone, right? So that's why we're here. आपके listeners को warning signs भी बताएं और they have to have their guard up. बहुत सारे सवाल हैं. I personally want to understand more about crypto and being in media when we get questions, because we take a lot of questions live as well. I want to understand crypto and so many other things. But why don't I start with this thing? एक fraud जो बहुत हो रहा है, आप social media पे जाएं, you have a video where former Prime Minister Justin Trudeau, current जो डैनियल स्मिथ हैं अल्बर्टा की प्रीमियर, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं कल देख रहा हूँ, येस्टरडे आई वाज वाचिंग, अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ है और क्लियर नज़र आ रहा है मुझे तो वैसे कि वो AI है, पर वो आ रहे हैं कि $400 डालो और 4,000 मिलने वाले हैं. हाउ इज शी मेकिंग, हाउ शी पुटिंग 400. सो जस्टिन ट्रूडो इसके नाम पे, येस्टरडे आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन द ग्लोबल मेल, डेविड रोजनबर्ग, उनके नाम पे कल एक आर्टिकल आया है ग्लोब में जिसमें वो कह रहे हैं कि $1 मिलियन से ऊपर फ्रॉड उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है. ही पर्सनली एडवर्टाइज्ड, ही वेंट एवरीवेयर, काफ़ी रुका उससे, काफ़ी उससे बेनिफिट हुआ, बट स्टिल बिसाइड्स उसके बावजूद भी बहुत सारा फ्रॉड. डेविड रोजन, कल एक बड़ा आर्टिकल उस पर आया. सो सेलिब्रिटीज़ के नाम पे जस्टिन ट्रूडो, हाउ ही इज़ मेकिंग मनी, वो एक वीडियो आता है और फिर मुझे भी कॉल्स आई, उन्होंने कहा कि दे वर टॉकिंग इन पंजाबी, उन्होंने कहा कि भाजी वो जस्टिन ट्रूडो की वीडियो आ रही है और इतने ने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो पैसे बना रहे हैं, ये लगता तो फ्रॉड है बट आई एम नॉट श्योर, सो आई थॉट आई बेटर आस्क यू, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ लेना है भाजी, ही सेड इन पंजाबी. सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कैसे, क्योंकि ये कौन लोग हैं, कैसे फ्रॉड कर रहे हैं कि पैसे लगाओ और ये करो, ये क्या चक्कर है? तो हम शायद इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम शायद एक दो हफ्ते में और एक सेलिब्रिटी का देखेंगे वीडियो जो है युद्धवीर जायसवाल soliciting investments, all that. मेरा नाम right? चाहिए. आपका भी लगेगा. I'm not surprised because the problem is टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है क्योंकि AI स्कैम्स जो हो रहे हैं, डीप फेक स्कैम्स जो हो रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपका कोई भी फ़ोटो लेके आपका वॉइस बना के बोल सकते हैं कि युद्धवीर जी ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट से आपको $4,000 मिल सकते हैं और $4 मिलियन मिल सकते हैं. तो technology has advanced so much. We have to have our guard up. We have to recognize the warning signs. And, जैसे कि मैंने कहा earlier, there are promises of high returns with little to no risk. आपका कोई दोस्त भी आके कोई आपको बोले कि आप $4,000 इन्वेस्ट करो और 4 मिलियन बन जाएंगे, your guard should go up. It's promises of high returns with little to no risk. Every investment carries some level of risk, right? और जो ये AI scams, deep fake scams बन रहे हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी पब्लिक लीडर ऐसा कोई बताए तो टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड कि is this real? Take a step back and understand ये ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा है, ये ठीक सुनाई दे रहा है कि नहीं ठीक सुनाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता है विदाउट एनी रिस्क, राइट? सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज़ celebrities or influencers on social media, जो भी हो, we call them finfluencers, so financial influencers.
हमने एक रिसर्च भी किया, उस पर पता चला कि 35% ऑफ कैनेडियंस 35 to 40% ऑफ कैनेडियंस फिनफ्लुएंसर्स की बातें सुन के they invest money, right? So if you see it on social media, WhatsApp groups and whatever it is, 30 to 40%, that's a very high number. that's a very high number. And that's partly because they believe what finfluencers say is a good investment. They take that and invest it. So हमारा काम और भी challenging हो जाता है, क्योंकि हमारा काम है use your own discretion, use your own understanding of investments and capital markets to make your own decisions. Kyunki, you know, there are so many avenues that investment opportunities come from now, right? Jaise ki aapne kaha, deep fake videos, AI scams, grandparent scams, crypto, you know, all these things come in. But when you think about why people invest, the key points are, sometimes people are investing for retirement. Sometimes people are investing to save for kids' education or to do a renovation in their house and all of that, right? So these are important things in terms of why they keep their money invested for a future reason, right? And it's unfortunate that these scammers are taking advantage of this. The scammers are going to come up with new ways to get at people's money. So we are trying our best to make sure that we provide resources. हम आपके viewers से भी बात करें आज and questions भी answer करें तो कि so that they have the tips, they have the resources to protect themselves. एक मिनट, ये जो आपने फिनफ्लुएंसर्स की बात की, मैं इस पे जरा बात करना चाहता हूँ. So what would qualify? I'm just curious to know. आपने कहा कि 30 to 40% करते हैं. So फर्ज कर लीजिए मेरे पास कोई लाइसेंसिंग नहीं है. I'm a before journalism I was an engineer, तो आज मेरे पास other than that Ontario engineers ऐसे मेरे पास और कुछ नहीं है. So I maybe qualify as an engineer या as a journalist I can qualify, but मेरे पास financial नहीं है. Today if I start going or anybody starts going on social media और मैं कह रहा हूँ financial advice देने लगा हूँ, यहाँ invest कर लें, crypto में डाल दें, इसमें कर दें, and you are saying कि 30 to 40% लोग हो रहे हैं. So as an audience मुझे कैसे पता लगेगा, हाउ वुड आई नो, या ओंटेरियो, दो सवाल हैं, 2 part क्वेश्चन है. फर्स्ट फ्रॉम द ऑडियंस कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये बंदा क्वालिफाइड है नहीं है, मुझे इसकी बात सुननी है कि नहीं, दिस इज वन पार्ट. और ओंटेरियो सिक्योरिटीज कमीशन, आपका कोई मैंडेट है कि आप कहते हैं कि भी हाउ कैन यू कम ऑन एयर, यू कैन नॉट कम ऑन एयर बिकॉज यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड. आप मिलियंस ऑफ डॉलर की लोगों की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है. प्लीज गो अहेड. नहीं, पहला गुड क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा मैंडेट, राइट? अच्छा. हमारा मैंडेट जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज अ सेंट्रल मैंडेट, राइट? ठीक है. तो जो भी आज फिनफ्लुएंसर्स है, किसी की भी फॉलोइंग हो, सोशल मीडिया में हो, मीडिया में हो, न्यूज़पेपर में हो, जहाँ भी हो, कहीं पे भी जिसके पास बड़ा से बड़ा मेगाफोन हो, वो एडवाइस देना शुरू कर देता है, राइट? एंड यू नो जो भी उनकी सुनता है, they start believing that stuff, right? Which is unfortunate. And the first thing your viewers should and listeners should think about is, जो भी influencers है, जो भी advice दे रहा है, are they registered with the Ontario Securities Commission? The best thing to do is give us a call. Our number is 1-877-785-1555, or you can go online at checkbeforeyouinvest.ca and you can do this check yourself, or you can give us a call. आपके व्यूअर्स पंजाबी, उर्दू, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, हम बात कर सकते हैं. आप बेझिझक फ़ोन करिए, हम more than 200 लैंग्वेजेस में आंसर कर सकते हैं इंक्वायरीज. तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. कोई भी इन्फ्लुएंसर या कहीं पे भी वीडियो में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी आपने देखा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट सोलिसिटेशन हो रहा है, यू कैन गिव अस अ कॉल एंड find out if ABC person or XYZ person is registered to sell that investment. Number 1. आपका second question पूछा आपने, you know, finfluencers, what are the rules governing the finfluencers, yes, right? Yes. You know, we have to be careful about free speech versus oversight of influencers, right? Okay. You know, if you have a social media following, वो आपकी following है, आपने बनाई है. आप कुकिंग के वीडियोस बनाते हो, शायद एज ए इन्फ्लुएंसर कुकिंग के वीडियोस से आपके फॉलोइंग हुई है, और आप फूड वीडियोस, पिक्चर्स लेते हो और ऐसे फॉलोइंग हुई है. देन पीपल स्टार्ट बिलीविंग योर कंटेंट, राइट? एंड उससे फॉलोइंग के बाद नेक्स्ट थिंग यू स्टार्ट recommending an investment. People, so the listeners and the viewers might think, इसकी अच्छी फोटोज आती है, इसकी अच्छी फूड की वीडियोस आती है, ये भी सही बोल रहा होगा. But that's the key part. If you're recommending an investment, the oversight part is you have to be registered to sell that investment. You cannot recommend an investment or solicit an investment without being registered to sell that investment. The difference is, अगर आप
रजिस्टर्ड ना हो बट आप सिर्फ रेकमेंड करो कि मैंने ये इन्वेस्ट किया है। जैसे कि हमने इंस्टेंसेस केसेस देखे हैं एफिनिटी फ्रॉड के, गुरुद्वारा में, मॉस्क्स में, मंदिरों में बातें होती है कि ओ मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, उसने इस पे इन्वेस्ट किया, आपने सोचा इसके बारे में ये अच्छा स्कीम है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। We have seen instances of affinity fraud. What we call is there is trust between members of the same community. जैसे कि हम हिंदी में बोले, पंजाबी में बोले, तो there is a level of trust, right? But again, at the end of the day, आप मंदिर से बाहर निकले, गुरुद्वारा से बाहर निकले, मस्जिद से बाहर निकले, पैसे सिर्फ आपके हैं ना, आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो। It doesn't matter where you meet, which religious institution you meet at, but पैसे आपके हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ना, आप इज़ देयर एनी वार्निंग साइंस एसोसिएटेड विद इट। आप खुद की रिसर्च करो, आप खुद फ़ोन करो हमें, आप खुद वेबसाइट पे जाके चेक करो, फिर मेक द डिसीजन, राइट? सो दैट एट लीस्ट यू हैव टेकन द स्टेप्स एंड यू हैव मेड द डिसीजन एंड इट्स योर डिसीजन, नोबडी एल्स कैन blame you for it. So if tomorrow you decide you want to research a finfluencer or an influencer who wants to advertise in your channel or your platform, you have to look into that, right? You have an obligation to make sure that you protect your own money. That's the key theme of our platform, where protect your money. तो नहीं, एक चीज़, सॉरी, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी मुझे चाहिए कि यही एग्जांपल ले लेते हैं। अ इन्फ्लुएंसर कॉल्स अस एंड दे से वी आर बीइंग पेड मनी फॉर व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो वो कह रहे हैं अदर देन सोशल मीडिया वी ऑल्सो वांट टू कम ऑन वाई मीडिया, हम आपके यहाँ भी वही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। मे बी देव गॉट मनी, वो हमें भी कहेंगे आपको भी वी विल पे यू, हम एडवर्टाइज करो, दिस इज आवर कोर बिजनेस, राइट? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन आई आस्क दैट इन्फ्लुएंसर कि आर यू इवन क्वालिफाइड, आर यू, वो ये कह सकता है कि येस दिस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है ये रजिस्टर्ड है नहीं है, शुड आई आस्क देम कि ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है कि नहीं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एंड डज द इन्फ्लुएंसर, हाँ जी, कॉल्स भी ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, कॉलर्स ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ कॉल्स भी ਲਵਾਂਗੇ, विल टेक द कॉल्स, जस्ट गिव 1 मिनट। इस जो इन्फ्लुएंसर है, शुड आई आस्क दैट कि आर इफ यू आर प्रमोटिंग सम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आर यू ऑल्सो रजिस्टर्ड विद OSC, होना जरूरी है? लॉ क्या कहता है कि वो कह सकता है कि आई डोंट नीड टू रजिस्टर, आई एम जस्ट एडवर्टाइजर, आई एम जस्ट इन्फ्लुएंसर, आई एम एडवर्टाइजिंग, क्या है? तो लेट्स टेक द टू पार्ट अगेन, राइट। पहला क्वेश्चन था जो फिनफ्लुएंसर आप पूछ सकते हो कि नहीं। द मेन पॉइंट आप जो बता रहे हो उसमें द प्लेटफॉर्म इज योर्स, आपका चैनल है, आपका मीडिया प्रोग्राम है, डिसीजन आपकी है, राइट। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे XYZ person is coming to your program to advertise their investment, right? अगर आप ना बोलो then it's no, अगर आप हाँ बोलो then it's a yes, right? Right. तो main point is that the decision is yours, the platform is yours. जैसे कि then let's look at the actual investment. जैसे कि एक crypto investment है, right? Let's take a crypto investment and ABC person is coming to Ymedia to solicit an advertising, right? क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो है इनहेरेंटली रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे भी 100% समझ में नहीं आता है, मुझे इतना आता है कि क्रिप्टो है जो है नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसके आगे आजकल जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो जितने एडवांस्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन क्रिप्टो, राइट? सो the investment at the end of the day, there are registered crypto asset trading platforms that are registered with the Ontario Securities Commission. तो अगर ABC person Ymedia के पास आए कि मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है XYZ क्रिप्टो के बारे में, पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि XYZ इन्वेस्टमेंट OSC से रजिस्टर्ड है या ना है, राइट? आप खुद फ़ोन कर सकते हो हमें, ओके, हम चेक करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है ABC पर्सन का, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, देन यू विल नो दैट he or she is just trying to advertise this investment opportunity. Then at the end of the day you're looking at the warning signs. Is there promises of high returns with little to no risk? Is it insider information? Is he registered or not? Is he or she registered or not? Yeah. And then it's your decision, right? That's the steps we can take or you can take to protect yourself. ठीक है जी, कॉल्स भी लेते थे, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, आई विल कैरी ऑन माय क्वेश्चंस एज वेल, बट वी हैव कॉल्स भी साथ साथ लेते चलें। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी, तुसी ऑन दे रहो जी, नसीब संधू जी, गो हैड। हाँ जी, नसीब संधू जी, यू गो हैड, तुसी ऑन दे रहो जी, की कहना चाहोगे?
ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ हाँ नहीं पॉलिटिकल टॉपिक्स असी विल डू आफ्टर 30-40 मिनट सर। पॉलिटिकल टॉपिक्स असी हुणे नहीं कर रहे क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट आई नो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट टॉक शो, बट वो असी 30-40 मिनट्स बाद करांगे, ठीक है जी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ हाँ ये तुसी सुन सकते हो। मेरी एक हंबल रिक्वेस्ट होएगी, आई नेवर लाइक टू इंटरप्ट एनी कॉलर, बट एक हंबल रिक्वेस्ट होएगी कि यह जिहड़ा साडा टाइम है नेक्स्ट 30-40 मिनट्स असी कोई क्रिकेट, कोई पॉलिटिक्स, कोई होर डिस्कशन नहीं करांगे। ओनली वन थिंग, जे कोई तुसी जानकारी, जे क्वेश्चन है तुहाडा कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बारे, इन्वेस्टमेंट बारे किते भी तुसीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिर्फ वही क्वेश्चन लवांगे। पॉलिटिक्स और G7 समिट वो सारा असी गिव मी अराउंड 40-45 मिनट्स, वो तो बाद गल करांगे। या आई नो पीपल आर एक्साइटेड, टुमारो देयर इज अ क्रिकेट। क्रिकेट के नाम पर भी फ्रॉड हो सकते हैं। आई नो कोई भी हो सकता है। आई नो मैनी सेलिब्रिटीज इन इंडिया, बाद में उनको पूछा गया बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि सेलिब्रिटी का इस्तेमाल किया गया। आई नो आपको भी पता होगा कि सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए कि यस ब्रिंग ऑन इन्वेस्टमेट, एंड देन लेटर ऑन उन सेलिब्रिटीज को फिर दिक्कत आई बहुत ज़्यादा कि यस व्हाई यू वर अ बिग क्रिकेटर, यू वर अ बिग सेलिब्रिटी, व्हाई यू वर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उन आई नो कि उनका भी पार्ट ऑफ द जॉब है। या और भी बहुत सी केसेस हैं। अभी यूएस में एक केस था कि किम कार्दाशियन प्रमोट कर रही थी कोई क्रिप्टो का। ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे सेम रूल्स अप्लाई। जैसे कि अगर कल कोई भी इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी कनाडा में कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है, ये बैटिंग इन्वेस्टमेंट अच्छा है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अच्छा है, अगेन देयर आर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। देयर इज पोटेंशियल फॉर losing all of your money, right? तो वही की थीम है, आपका पैसा है, आप खुद की डिसीजन लो। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप कल ही इन्वेस्ट करो, अगर कल इन्वेस्ट ना करो तो ये अपॉर्चुनिटी विल गो अवे। दोज थिंग्स आर बिग रेड फ्लैग्स। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी कहता है कि आज ही पैसे डालो नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, दोज आर रेड फ्लैग्स। जी, मैं अगली कॉल पे जाने से बिफोर आई टेक द नेक्स्ट कॉल, मेरे 4-5 क्वेश्चन है वो रह ना जाए, वी आर रनिंग वेरी फास्ट टाइम है। बीइंग इन मीडिया ये सारी चीज़ें, मेरी मीटिंग्स भी होती हैं, पीपल कॉल मी एडवर्टाइज ये करो वो करो। एक जो बहुत कॉमन चल रही है दैट इज़ मॉर्गेज। उसमें क्या है कि रियल स्टेट में अगर हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है कि यस आप $50,000 $100,000 आपका नहीं, चलो फर्ज करो ABC है, ABC पर्सन है, वो कहता है कि ये 4 बंदे हैं, ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000 100,000, वी आर क्रिएटिंग अ सिंडिकेट ऑफ मॉर्गेज एंड देन वी पुट सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज, एंड देन वो वहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं और ये हमें देते हैं। ये बहुत चल रहा है बड़े दिनों से। ये ठीक है नहीं ठीक है, क्या कर और कैसे, हाउ कैन आई मेक श्योर, मैं फ़र्ज़ कर लो एज अ ले मैन, फ़र्ज़ कर लो आई हैव नेवर डन दिस, मैंने किसी को नहीं दिया, तो मेरा फ्रेंड भी आ सकता है, मेरा कोई जानकार आ सकता है, दे कैन कम टू मी कि यस वी कलेक्ट मनी और हम मॉर्गेज में डालते हैं, सेकंड मॉर्गेज, पैसे डालो अच्छे पैसे मिलेंगे। गो हेड। तो गुड क्वेश्चन। अगेन हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में ऐसे बहुत चल रहे हैं, मैंने भी केसेस देखे हैं, मैंने भी न्यूज़ स्टोरी सुने हैं। तो सिंडिकेटेड मॉर्गेजेस जो होता है, जैसे कि सिंपल टर्म्स में हम एक्सप्लेन करें, जैसे कि $10,000 लिए यहाँ से, $10,000 लिए यहाँ से, $20,000 हुए, and it becomes a syndicated mortgage, it becomes a security, right? So main thing is if it's a security, it is overseen by the Ontario Securities Commission. Mortgages जो है वो it is overseen by a different agency called Financial Services Regulatory Authority, FSRA. So that's the regulatory landscape. The important lesson and important thing for your listeners and viewers is, you know, आप जो $10,000 डाल रहे हो जिस syndicated mortgage में, अगर पेपर पे लिखा हो ब्लैक एंड वाइट में कि $10,000 कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगर $10,000 पूरे चले गए तो क्या होगा, कहाँ से पैसे वापस आएंगे, there has to be some sort of document that shows आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, right? That has to be clear, black and white. ऐसे ट्रस्ट के ऊपर $10,000 आप देंगे, then it's a different story, right? जैसे कि you know, nobody can do anything about that. So that's the most important thing. At the end of the day, पैसे आपके हैं, आप $10,000 इधर से डाल रहे हो, $50,000 इधर से डाल रहे हो, एक बॉक्स में सिंडिकेटेड मॉर्गेज बना रहे हो, पर you know, कोई डॉक्यूमेंट तो हो, कोई प्रूफ तो हो कि आपने डाले हैं। अगर पैसे चले गए तो किसके पास आएंगे, राइट? तो पहली बात तो ये है कि अगर पैसे चले गए देन आप पुलिस के पास जाओ, हमारे पास आओ। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि ओके व्हाट वाज द एग्रीमेंट,
आपने $10,000 डाले पर what was the reason, what did it become? आपने ट्रस्ट पे दिए हैं और आपने आपके पहचान वाले हैं इसलिए दिए हैं. Those are important things to think about, right? Because we hear cases every day about people losing money and not getting it back. And so our job is challenging day by day to educate everybody, to recognize the warning signs, protect themselves, and make sure that they take their own informed decision about their money. So syndicated mortgages के cases बहुत चल रहे हैं. आप फिजरा को भी फ़ोन कर सकते हो, हमें फ़ोन करके हम कनेक्ट करवा देंगे आपको. Again, the number is 1-877-785-1555. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਇਕ ਪੁਆਇੰਟ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਦੇਖੇ. ਆਈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रॉड्स बट पीपल डू नॉट कम आउट. मैंने वो भी फ्रॉड देखा है बहुत साल पहले, आई थिंक अराउंड 20 years ago. There was a guy, he came from different countries, South Asian guy, and he was telling कि वो कह रहा था कि यार I can give you the numbers if you invest money with me and you will win a lottery. Yes. And he was offering us at that time, I'm talking about 2005 or 6, around that time, he was offering us media guys around $500 to $1,000 for just 5-minute session. And with due respect, I will not name anybody that came in Toronto Star. It was an international wide case. And yes, many people made money in the media also because he was offering a lot of money for that sort of thing. And I told my colleague that we will not take him on the air. So he said, sir, people have magical powers. You don't believe on that? हाँ उन्होंने कहा, कहना तुसी साडे अपनी सोच इंपोज कर रहे हो ते लोकां कोल मैजिकल पावर हुंदी है. So people have magical powers. So he has magical power. If people put in money, then he will tell them with the lottery numbers. He has a big house and our salesperson who went there, he said, sir, he has a big house in Mississauga. He is living a luxury life, flashy cars. So this is not a fraud. People should, and we should advertise. And he's giving us a lot of money, 500. So he's even ready. I know your program is popular. This is 21 or 22 years ago. So I will even name that because it was in public domain. The guy's name was Roshan Baba. So he's a South Asian guy. So I said, so he got upset with me, our salesperson, sir, I'm bringing business. So you tell the target. So you are trying to impose your ideas on us. So I said, why people would invest money? I don't even understand the concept. How can people invest and winning the lottery? I'm not understanding the concept. So anyways, he said, sir, at least just try it out. He's ready to pay even $1,000 for 5 minutes. So I know many people, I know there are media houses who made $25,000-$30,000 in those 20 days which it occurred. Anyways, cut the long story short, so he came on our channel. He had a car waiting outside. He came here and I asked him, what do you do? What's your core business? I mean, he said, I'm Baba. God is taking care. I said, God is taking care of you. वो कहता रब मेरी टेक केयर कर रहा है, रब सब दी टेक केयर कर रहा है. मैं कहा रब टेक केयर कर रहा है, दैट इज़ फाइन, बट व्हाट्स योर कोर बिजनेस? व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आर यू वर्किंग? वो काम को कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वो मैंने कहता नहीं रब सब दी टेक केयर कर रहा है, मेरी भी टेक केयर हो रही है. सो उन्हें क्या भी मैनू तुसी आओ मिलो, दिस इज़ माई नंबर. इन 4-5 minutes ही जस्ट kept on going and this. But I said I'm not. He said, have you heard about Bollywood celebrities का नाम लेना? You heard about शाहरुख खान का नाम सुने? I said, yeah, everybody knows शाहरुख खान. He's a celebrity. Oh, I made him. I said, you made him? I have never heard your name, Roshan Baba. He never mentioned your name. Oh, Sanjay Dutt, I made him. All these celebrities, he started naming all these celebrities. But Kartalon he said, any issue, call me. But more importantly, if you want to win lottery, invest money with me, it will be 10 times or more times with the lottery. So that is what he did. When he moved out, he had a big bag of cash and he gave our salesperson $1,000. He said, I love this guy and I want to come over and over again. 1,000, 2,000 doesn't matter. The moment he walked out, I called my salesperson. I said, and my face was red already. My wife, she also comes to it. She was sitting with me and she says, what's going on? You're upset. I said, don't ever bring this guy to us. Never bring this guy. He should not come on air. And then we started announcing that. We started doing our own thing, right? Don't believe. After around 10-20 days, the news was published in Toronto Star, Globe and Mail, everywhere. Canada-wide search warrant issued for this guy, RCMP.
Yeah, he was being tracked Canada-wide. And then this guy had come from, I guess, US, and he was finally caught in England. Finally caught in England. So he had an international network of doing all these frauds. So there are many different types of frauds also that we hear. One thing which I have not heard any complaint, मैंने यदि कोई complaint नहीं आई, but एक बहुत investment एक चल रही है. So I again want to say I have not heard any complaint. I am not saying that it is right or wrong. Today we have the guest, let me ask him, but it's being talked a lot these days. A investment strategy आजकल बहुत आ रही है. What is that investment strategy? वो कह रहे हैं कि you can own an apartment. Okay, in different places, here is an apartment building. So it has 500 units. It's worth maybe 200 million, 300 million, and you can own in a syndicate thing. Investment ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ तो ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਲਓ. I have not heard complaint. I know अपनी community ਚ काफ़ी कर रहे हैं लोग. Many people are doing that. I'll again say that I have not heard, so I'm not speaking anything against them. But I want to know what is the money safe, protected or not. I'm sure they must be doing their own due diligence who are investing, but I also want to know today from you. So ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, 200 ਮਿਲੀਅਨ, ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਦੈਟ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ 10,000, 100,000, 200,000, 500,000, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਵਨਸ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਔਰ ਦਿਸ ਔਰ ਸੋਲਡ, then you make money. So लोग साढ़े आंदे एक भी एक चल रहा है. Is it okay, नहीं okay, कोई complaint आई या नहीं आई? Go ahead. नहीं, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ, आपने जो रोशन बाबा के बारे में बताया, वो दैट इज़ अ स्टोरी दैट शोज़, जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा मेगाफोन है साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, तो आपने जो डिसीजन लिया ये प्रोग्राम के ज़रिए, आई अपलॉड यू फॉर दैट. Thank you. You know, ethics is something that comes inherently with values. Right? If you have good ethical values, that cannot be bought. That cannot be, you know, it's inherent. आपके बचपन से होता है ethics, right? So I applaud you for that. I applaud the team for that. The second part of the question, आपने जो the building के बारे में, केस के बारे में बताया, तो CMHC जो है, CMHC के ज़रिए ये प्रोग्राम चलता है, इतना मुझे मालूम है. पर you know, OSC के ज़रिए ये प्रोग्राम नहीं चलता है, तो I cannot comment on ये प्रोग्राम के बारे में. बट मैं आपके व्यूअर्स और लिसनर्स को ये बता दूं कि CMHC का जो प्रोग्राम है, उसके लिए आप CMHC को फ़ोन कर सकते हैं. कोई भी आप, जैसे कि ब्रैम्पटन हो, मिसिसागा हो, कोई भी US में हो, कोई भी बिल्डिंग हो, अगर आपके पास कोई आए कि आप 200,000 इन्वेस्ट कर लो, आपका पार्ट ओनरशिप हो जाएगा बिल्डिंग में, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बिल्डिंग कहाँ बनने वाला है, कब बनने वाला है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है और रिकोर्स है कोई इसका. अगर बिल्डिंग ना बने तो पैसे को क्या होगा, और अगर ये CMHC के ज़रिए इंश्योर्ड है तो उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ब्लैक एंड वाइट होता है. आप पैसे डालो, पैसों का कुछ होगा, आपको कुछ एसेट मिलेगा या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, दैट इज़ प्रीटी ब्लैक एंड वाइट. जो एडवर्टाइजिंग होती है, जो सोलिसिटेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट्स वेयर इट बिकम्स अ लिटिल बिट ग्रे एंड डिफरेंट कलर्स एंड ऑल दैट. तो my advice to your listeners and viewers is, you know, in terms of investments, when it comes to putting your money ahead, think a little bit of black and white. Of you're putting $10,000, what are you getting for it? What is the recourse if you lose all the money? Is there a potential for losing all the money? Because the biggest warning sign is, there is no investment with no risk. All investments carry some level of risk, and if you're getting a hot tip or insider information, that's a warning sign. If the person that's selling you that program, either through CMHC, through other programs or anything, what are they registered to sell you? Are they registered to sell you that, or are they registered to just advertise it? Those are questions your viewers and listeners should ask. आप, कोई भी program हो, कोई भी program आपके पास आए, आप ये question पूछ सकते हो. Real estate हो, crypto हो, mutual funds हो, stocks हो, कोई भी हो, right? आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हमें बेझिझक आप फ़ोन कर सकते हो अगर आपको राइट आंसर ना मिले, और आंसर जो मिले आपको समझ में नहीं आए. ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं जो सबको समझ में नहीं आते हैं. यस, राइट, बहुत से स्कीम्स चल रहे हैं. आप हमें फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो कि ऐसा स्कीम ठीक है ना ठीक है, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट में हम सारे स्कीम्स कवर नहीं कर पाएंगे. जो मेन पॉइंट है कि रेड फ्लैग्स जो होते हैं वो हमने हाईलाइट किए हैं.
There is no investment that comes with no risk. There is no, like, you should not act on hot tip or inside information. You know, the person has to be registered, and then there is promises of guaranteed returns. जैसे कि आपने पैसे डाले, guaranteed आपके पैसे increase हो जाएंगे. Those are big tips that apply across all the schemes. हाँ, मैं अगली कॉल पे जा रहा हूँ. ये थोड़ा सा रेड फ्लैग जरा हिंदी में भी बता दें. ठीक है, आप रेड फ्लैग मैं पंजाबी च फिर एक्सप्लेन कर देंगे ਜਿਹੜੇ रेड फ्लैग ने, क्योंकि बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ रेड फ्लैग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ नज़र ਕੀ आ रहे ਨੇ, राज जी दसणगे कि और केड़े रेड फ्लैग है. हिंदी में पॉइंट टू पॉइंट रेड फ्लैग बता देंगे. हाँ, तो पहला रेड फ्लैग जो है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है और आपको ये बताया जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट के आपके इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है, आप बेझिझक इन्वेस्ट करो, आपके पैसे कभी भी जाएंगे नहीं, कभी भी ज़ीरो पे नहीं आएंगे आपके पैसे. दैट्स द नंबर वन. दूसरा रेड फ्लैग जो है कि आपको कोई आके बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बता रहा हूँ. इट्स अ हॉट टिप, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. ये दूसरा रेड फ्लैग. तीसरा जो है कि गारंटीड रिटर्न. आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और ऐसा है कि आपके पैसे 100% इंक्रीज हो जाएंगे वैल्यू में. दैट्स अ थर्ड रेड फ्लैग. और जो चौथा है वो है आपका जो भी आपके पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके, वो रजिस्टर्ड ना हो OSC के साथ. ये चौथा रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड ना हो तो हमें पता नहीं है कि कौन ये आदमी है, कौन है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है. अगर रजिस्टर्ड हो तो हमें पता है कि कोई हिस्ट्री है, डिसिप्लिनरी हिस्ट्री है उसके पास, और कोई ऐसे स्कैम्स ऐसे कुछ किए हैं उन्होंने. तो ये सब हमारे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो. हमारा वेबसाइट है checkbeforeyouinvest.ca है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो. हमारा और एक वेबसाइट है getsmarteraboutmoney.ca, जहाँ पे बहुत सारे टिप्स और टूल्स एंड कैलकुलेटर्स हैं. और हमारा फ़ोन नंबर है 1877-785-1555. All right, thank you. Chris, I want you to highlight different fraud prevention tips, including crypto as well. I know there are many people who are financially literate, educated as well, but and they are investing in crypto. But as Raj also mentioned, Raji said that he doesn't have nobody. I doubt anybody has 100% clarity on crypto. But obviously, two-part question for you. First is, while investing, how we should be careful, number one. The second part of the question for you, Chris, is that especially when these days in crypto, at least we can be careful about certain things. Please go ahead, Chris. Sure. So when investing, as Raj had mentioned, I can say I don't understand Hindi, but I'm sure he's covered these points. It is really important to understand what it is you're investing in. So you need to do a little bit of research, right? Understand what it is, understand how risky it is. Every investment has risk. There are different levels of risk. So you want to understand how risky it is because you want to know how much risk you're going to take on. The other thing is it's really important to make sure that you work with someone that's registered, because that tells you they have certain qualifications, right? So you want to know what it is they're qualified to do, what services they're qualified to offer, what products they're qualified and registered to provide you. And then when we're talking about crypto is something that people are hearing a lot about, and there are a lot of different types of crypto assets. People that are making money in crypto will definitely tell you that it's a good investment, they're making money. People that are losing money will not tell you that, right? Fraudsters know people are interested in crypto, so they're taking advantage of this. One of the ways we are providing protection to people who are interested in crypto is saying if you want to invest, purchase crypto, make sure you're purchasing it through a registered trading crypto platform, right? So crypto platforms have to be registered with the Securities Commissions. There are a lot of crypto platforms right now that are not registered. It's really important to check. It's very easy to check. They can call the OSC. Raj mentioned our toll-free number, 1-877-785-1555. They can also go online, check before you invest. They can find a registered platform. You go on the website, you can also find a list of different registered crypto trading platforms on our website. Yeah, Chris, and that's the website, getsmartaboutmoney.ca?
Yes, you can go Okay. on there. Yes. Yes, and we are continuously flashing the number as well. Yeah, that's the number at the bottom of your screen. So you can call this number. So we'll keep on flashing the number and the website both. So in case you can call, and as Raji had already earlier explained, Hindi, Punjabi, Urdu, Mandarin, Cantonese, Filipino, whichever language you prefer, Italian, they can almost answer in about 200 languages. So feel free. And about the privacy, as you mentioned, even in that Roshan Baba case, there was an article in Toronto Star. One person, he came out that $450,000 they lost over there. $450,000. That was their lifetime saving. But the person also mentioned there are many others who put money in there, but they don't want to come out. So maybe someone is already a victim of fraud. And Chris, if they do not want to reveal their identity, I'll ask this in Punjabi also to Raj later on. This is an important question. They do not want to reveal their identity because when maybe we may or may not understand, but sometimes when they get scammed, so they are very fearful that this could be mafia or somebody. I have heard many cases people don't want to come out. So when someone calls you, how do you deal with the privacy? Is it anonymous, or how do you deal with privacy concerns? So At OSC. So at the OSC, we wouldn't share your information Right. with just anyone. Right. If you were to report the fraud, certainly we would need that information. If you report it to the local police, Yeah. they would need that information. But your information would not just be shared. Your information is there because it's information that we would need to help us investigate the case, to help us get after these fraudsters. But we're not going to share your information and make it publicly available. That Yeah. is, that is, for privacy concerns, that's not something we would do. Okay, good. Raji, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ different issue ਵੀ ਹੈ that we are dealing right now. We're working with police and lot of law enforcement agency that it's not concerned with you. It's a different issue, but similar situation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. That's the extortion calls ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ. South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ very prominent ਹੈ. We're working with law enforcement agency as media over there. But ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, extortion calls ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. Police is warning, do not pay the money, do not pay the money, but despite that, people are paying the money. Extortion calls. So police is telling, do not pay the money. लेकिन उत्थे की है कि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वो दस ही नहीं रहे. Extortion call आती है, चुपचाप पे कर दे. और ਅਸੀਂ भी एडवाइस करते हैं कि do not pay the money, contact police. लोग कहते हैं वो डरते हैं, they are fearful. ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ will get into trouble. Why deal with trouble? So even they may or may not pay, but they do not even report to the police. Extortion call ਆ ਰਹੀ ਹੈ. They are fearful. So in your case, मैं चाहना है ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ I'm a victim of fraud ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ why bother Ontario Security Commissions, my name will be this, maybe police comes, this, that, I don't know to ਮੈਂ ਪਚੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ. So how would you make sure कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ benefit ਚਾਹੋ OSC works to your benefit और privacy issue जरा हिंदी में एड्रेस कर दें जरा. हाँ, जो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई कॉल्स आए ऐसे, अगर आप दूसरी साइड का सोचो कि मैं ओएससी से हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप फ़ोन करके हमें बताएं. पर आप नॉर्मल पीपल के बारे में सोचो. जैसे हम सब नॉर्मल पीपल हैं, हमारे घर पे बच्चे हैं, सब है, राइट. एंड अगर आप सोचो कि डर तो लगेगा ही, राइट, 100% डर तो लगेगा. सो मैं समझ सकता हूँ कि डर लगेगा कि क्या करें क्या ना करें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट. ऐसा डर तो लगेगा. पर मेन चीज़ मैं यही कहूँगा कि लोकल पुलिस के पास जाके आप रिपोर्ट करें. हम पुलिस के साथ काम करते हैं. पील पुलिस, यॉर्क रीजन पुलिस, टोरंटो पुलिस, सारे पुलिस फोर्सेस के साथ हमारी पार्टनरशिप है. RCMP, OPP के साथ भी. आप 100% पुलिस के पास जाएं, रिपोर्ट करें. मैं इंडिविजुअल केसेस के बारे में ये नहीं टिप दे सकता कि आप पैसे पे करो या ना करो, दैट इज़ अ पुलिस इशू. पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि डर लगेगा, 100% डर तो लगेगा ही. कोई भी कम्युनिटी में हो, साउथ एशियन हो, चाइनीज़ हो, फिलिपिनो हो, कोई भी कम्युनिटी में आप ऐसे कॉल्स आएंगे, डर तो लगेगा ही. क्या हो सकता है फैमिली को, क्या नहीं हो सकता, राइट. पर पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू. पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी क्योंकि आप हेल्प करने के लिए ही है पुलिस के पास जाएं. आप हमारे पास भी आ सकते हैं. हम कभी भी ये नहीं कहेंगे आप OSC को बॉदर कर रहे हो, क्योंकि कभी भी आप अगर
एक्सटॉर्शन कॉल एक साइड पे रखें और विक्टिम ऑफ अ स्कैम के बारे में सोचें। जैसे कि आपने पैसे लगाए हैं कहीं पे, आपके पैसे गए, मतलब इट्स लॉस्ट। पहली बात तो ये है कि एम्बैरेसमेंट तो होगी कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, पैसे खो गए, मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए रखे थे और रिटायरमेंट के लिए रखे थे और पैसे गए, तो एम्बैरेसमेंट तो होगी, राइट? तो you know, once you're over that stage, you know, you have to think about, और भी बहुत लोग जो हैं उनके पास भी ऐसे स्कैम्स जा सकते हैं. What can I do to make sure that there are no more victims of that same fraud, right? That is a big step. I understand that 100%. वो initial embarrassment, वो anger phase, वो सब होने के बाद, that next phase is important because, you know, we can only know about new scams and frauds that are popping up if people tell us, right? Because we like to do this in the community, we like to listen to the community, and we want to hear from the community what's going on. You know, what are the latest things that are being thrown at you at community events, at you know, different events that you go to? क्या चल रहा है आपके community में, कि कौन से scams आ रहे हैं, कौन से investment opportunities आ रहे हैं? तो मैं समझ सकता हूँ कि डर लगता है, आप पुलिस के पास जाएं, अब हमारे पास आएँ, प्राइवेसी की आप चिंता ना करें, क्योंकि हम कभी भी कोई भी नाम पब्लिक में नहीं रखेंगे कि दिस पर्सन हमें कॉल करके बता रहे हैं कि ये स्कैम हुआ है साउथ एशियन कम्युनिटी में, ये वहाँ पे हुआ है, हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਮਬੈਰੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੀਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ OSC ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਟ them deal with that। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਹੈਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਝਿਜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। गुड मॉर्निंग सर। जी बालासुब्रमण्यम जी, आपको भी वणक्कम है जी। हाँ वणक्कम वणक्कम। हाँ जी हाँ जी। My first question is, do you work with the provincial government or federal government? Provincial Because government. nowadays, you know, people are very smart. You know, they keep passing on the buck. They say, oh, this is federal matter or the provincial matter. Can you answer me that, please? Yeah, so we are associated with the provincial government. We're an agency of the government of Ontario. And our job is to make sure we're there to help you. So, you know, earlier it was mentioned about different investment schemes like syndicated mortgages. Obviously, if it's not within our jurisdiction, we're going to tell you this is the place you need to go to. They are the people that deal with it. We oversee the capital markets in Ontario, but we will try our level best to help you. Okay, now the second question is, do you only teach the people, give information, or do you also report all these fraud things to the law enforcement departments? Yes, we have a partnership with all the police forces, and our enforcement team and our OSC teams work with the police forces on a regular basis. So yes, we actively monitor all channels, social media, we monitor, you know, public space. We keep track of what's going on in the market for sure, but it's a big space, right? We cannot keep track of everything. Even our police forces and our colleagues in the police forces need help from everybody in everyday life. Okay, do you guys also try to catch those people who run the fraudulent ad, like the ad from Justin Trudeau and all those people? Yes, we do. If we see that there is a violation of the Securities Act, our enforcement team will bring forward proceedings which may result in jail time or banning from the securities industry in Ontario. But it's very hardly we hear on the news that, you know, some people have been caught because of these running these scams. Why is that? Like, why not? Why so many people? Why aren't those people getting caught? Because that's a good question. You know, what happens is sometimes
these schemes are run by people that live outside of the country, outside of jurisdictions. So we're increasing our partnership with international partners and police forces to make sure that we're taking action against these people regardless of where they live. But the reality is a lot of times some of these bad actors are outside of the jurisdiction. So what we can do within our jurisdiction, within the partnerships, within Canada, we try to do Canada, US, and we're actively increasing our partnership as well. Okay, there are still many financial companies who are, even though they are registered with those, IIR investment, whatever, IIROC, whatever, but they still don't report to the CRA those incomes, right? The way regularly we get the T3, T5, T5008, whatever those investments, they don't have a proper system. So do you recommend those to the government? So they also should be properly regulated? Yeah, I mean, what you mentioned is IROC. IROC is now CIRO, Canadian Investment Regulatory Organization. If you get a T5, it's your T5. So, yes, you have to talk to the firm that you're working with to make sure that all parties report it to the CRA. If you see any discrepancy, especially if it's something related to your own money, you kind of have to take that step. But if you have a problem with the firm, the first thing I would recommend is talk to the advisor that you're working with, talk to the firm you're working with to make sure that they can remedy that for you. And also, one more thing, this sending money to a different country on a different account is much easier sending through crypto, right? Why is it so easy to send through crypto rather than the direct bank through the bank, right? So we should do something to stop this crypto business. Yeah, I mean, what we're doing here today is also part of what we're trying to educate people on about crypto. It's a big industry. We want to make sure that if you're considering crypto, you go through the registered platforms that have registered with the OSC, because a lot of times that's one way to make sure that you know who you're investing with. We know what's the company doing, what are their compliance things that they're doing at their end. So we want to make sure that investor protection is central to everything that investors do. But yeah, I get your point about crypto investments and crypto interest is increasing. For example, the problem is, suppose you opened an account in India, don't send through the bank account through the proper channel. He tells me, right? And then because the government agency or whatever, some organization, they may come in the middle. Okay, you send it through crypto. So we send it through crypto, and over there it's converted into the regular. So it's hard to track, right? That's the main problem. Yeah, all I can say is we're actively monitoring it. Crypto is a big industry. It's something that we're looking into. And again, the government regulations obviously take more time than technology in terms of moving forward, but we're actively monitoring it. Yeah, because the problem is this government, all levels, they are sleeping, they don't do nothing, right? So because now, since you guys know the actual things, whatever is going on, you should be a little bit more stronger and, catch this government accountable. Okay, Ymedia, thank you so much for your guest, and thank you. Have a good day. Thank you. Bye. You too have a wonderful day. Thank you. That is the whole idea of this program. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, that is the whole reason why we are sitting over here. So we will not go on the political side what government is doing or not doing, but thank you for appreciating that. The ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. The reason behind why we are doing this program, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏਗੀ ਰੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ $1,00,000 ਦੇ ਦਿਓ, $2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ $1,00,000, $50,000, $2 ਲੱਖ ਐਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਈ ਬੀਨ ਅਨਾਊਂਸਿੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਨਿੰਗ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ they don't have any, they are, ਉਹ ਵੀ clarity ਦੇ ਦਿਓ, some people ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ clarity ਹੋ ਜਾਏਗੀ. You are, this is a crown corporation, so where do you get paid from? You're getting paid from the government, you're government employees, right? Yeah, you don't have any business. We are unbiased, so we don't. We're not here to sell you any products or Yes. investments and things like that. All of our resources are unbiased. मैं हिंदी में हिंदी में बता दें, हाँ, हिंदी में हमारे वेबसाइट पे, हमारे फ़ोन नंबर पे जब भी आप फ़ोन करोगे, हम जो भी आपको बताएंगे सब अनबायस्ड होगा. हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट आपको रेकमेंड करें, कोई ये आप ये चूज़ करो ओवर बी, ऐसा कोई हमारा मोटिव नहीं है. हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, आप खुद की डिसीजन लो, आप सेकंड ओपिनियन लो, और आप ये चेक करो कि जो आपके पास आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके वो रजिस्टर्ड है या ना रजिस्टर्ड है हमारे OSC के सिस्टम के जरिए. और यही हमारा मेन मोटिव है. हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव ऐसा कुछ है नहीं. और मैं ये भी बता दूं कि बहुत तरह के फ्रॉड हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल एंड टेक टू मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज बीइंग इन मीडिया वी आर एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट फ्रॉड. रीसेंट फ्रॉड जो हमने कैच किया था, वी आल्सो कैच फ्रॉड्स. रीसेंट फ्रॉड जो हमने कैच किया था, दैट वाज दैट वी गॉट एन एड फ्रॉम एन एयरलाइन कंपनी. एयरलाइन कंपनीज हमें ऐड आई. तो मेरी कलीग हैं, आई कैन इवन नेम हर नेम इज़ बानी. मेरी कलीग हैं, शी इज़ इन आवर सेल्स डिपार्टमेंट. She got a call that we want to advertise. So they said, on all your platforms, we want a full page color ad in your midweek newspaper. I said, okay. On your radio, fine. On TV and digital, all 4 platforms digital. I said, okay, fine. For 2 weeks. And she said, if you want to advertise so heavily, so the price was somewhere around, I guess, $10,000 or $20,000 just for 2 weeks. So I said, okay, fine. No price is not an issue. Done, deal. So, and they were advertising for a business class air ticket for India. So I, in the morning, as always, I was given the mandate, this is my show and I'll start my radio and TV show in the morning, and they said, okay, this is advertising. Okay, fine. Airline for a business class to India. I said, it's quite cheaper anyways, that must be some sale going on. And call this travel agency at this number. So while I advertised, Bani called me. She said, my colleague, she called me. She said, sir, they said, take the payment. I said, we'll take the payment, don't worry, payment is coming, we'll take the payment in the afternoon. The guy who charges a credit card, he will charge, don't worry, I'm doing my show. They said, no sir, they are very eager, charge the payment. So I said, don't worry, you called me twice in the show, I'm doing my show right now, why are they so eager to give us the payment? That's fine, we will take it. They're not running away anyways, we'll take the payment. I'm focusing, there are political issues, cricket, so many things going. So then what happened, she again called me 3rd time. So I said, you know what, stop their ad. Stop their ad. Bani said, sir, why? I said, stop their ad. Why are they calling 3 times in just 1 hour? Why are they so eager to pay us? We should be eager to get the payment. Why are they so eager? So I said, stop the ad. So then I stopped the ad. And then their address was in Vancouver. I called our reporter in Vancouver. I said, go and check. So he called me there, sir, yes, they have a big board outside. I said, outside, what sort of reporter you are? Go inside and check it. Then he went inside. Oh sir, there is no office, there was only board outside. Yeah, I said, that's what I was telling you, there is no board. Then you know, they on the newspaper ad, we had not published anything by the time. It was only on our radio show. So then and the name of the airline was there. I will not name the airline now. The name of the airline was that. We called the airline. Airline said, we don't know. I said, your name is coming in this ad. You are a big airline. Everyone knows you. Your flights go to India regularly. And after about 8 or 10 days, it is being advertised that you are selling business class for this. You should be aware. They said, we don't know. Then there were other government officials name over from Vancouver, from Canada. We called them. They said, we don't know anything about that. I said, you guys should take action. They said, what action we can take? So the government authorities are not taking action. The airline was not taking action. Then I called another guy who I know. I can name him. He's a popular guy in the news. His name is Ajay. So he also ran for consular election. So I called Ajay. I said, Ajay, you have been working in this airline. This is a big airline. They are advertising this thing. And I think this is a fraud. And we started, I started calling I said, check wherever there is ad in any other media. So then I called another media guy, my colleague. I said, this ad is in your paper. Don't put it next to me. He said, why, what happened? I said, I'm investigating. This is a fraud happening. So this is a fraud. So then I called another radio guy. I said, don't put that ad. So they had put in one newspaper, one radio, and they've used all our 4 platforms.
So I said $20,000. Yeah, which sometimes, you know, builders, they're genuine ads also, but this was because they kept on insisting, take the payment, take the payment. Then we started calling them, the number. Then I said, where is your office? They said, Vancouver. I said, no, your office is not there. It's just the board outside there. So then they said, since COVID we have shut down. I said, since COVID you shut down, but why would you put a board outside and there's nobody sitting inside? And where are you guys operating from? They said, we are operating from US. I said, why are you operating from US? Oh, travel agencies operate from wherever, everything is online. So I said, okay, it's online, give me a number. But anyways, cut the long story short, while interacting them, they started laughing and then finally they started talking in Punjabi. Yeah. And they said, yeah. And they admitted very openly. In Punjabi, they said, Hanji, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. We do so many frauds and some of them, you know, we get business. I said, you're Punjabi, don't you feel ashamed? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ, they'll go there, they won't find anything. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ, you should feel ashamed. ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. So then they said, ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਜੋ ਵੀ, and then they disconnected the phone. The next day we announced everywhere that this is a fraud which is happening. We have already informed few of our media colleagues, but if anybody is booking this, there was a thing that they would book the flight, it would show up for some time, they would actually doing the genuine booking, so it would show it for some time, but then they would have, the fraud was they would have cancelled the entire thing, and you can't do anything because the money, whatever the money they have spent, that's what it would have happened. So anyways, so there are so many frauds that sorry, go ahead. Yeah, I was just gonna say, आपने जो कहा कि इस केस के बारे में, हमारे OSC सिस्टम में हमने एक नया लिस्ट बनाया है जो है इन्वेस्टर वार्निंग्स एंड अलर्ट्स लिस्ट. हमारे वेबसाइट पे है. उस पे हर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है जो भी मतलब कुछ हैंकी पैंकी कर रहे हो. वो लिस्ट आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को शायद इंटरेस्ट होगा कि वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि XYZ कंपनी आपके पास आ रही है, XYZ पर्सन आपके पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट लेके, जैसे कि एयरलाइन वाला होगा, कोई भी होगा. अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अगर वो लिस्ट पे नाम हो तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग. वो हमारे लिस्ट आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. देयर आर मोर देन 400 और 500 नेम्स ऑन द लिस्ट. अच्छा, आपने लिस्ट किया हुआ है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा टूल है. दिस इज अ वेरी गुड टूल. तो ये आपकी वेबसाइट वो जो आ रही है getsmarteraboutmoney.ca पे आप देख सकते हो. It's called Investor Warnings and Alerts List. हमारा पूरा लिस्ट है. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड टूल. जो थल्ले वैबसाइट आ रही है getsmarteraboutmoney.ca, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਡ ਅਲਰਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਫਰਾਡ ਅਲਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ के नाम भी है वहाँ पे. हाँ. ओके, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ getsmarteraboutmoney.ca ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿ 400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ. आप फ़ोन भी कर सकते हो हमें. आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, हम वो लिस्ट आपको फ़ोन पे भी बता देंगे. फ़ोन पे बता देंगे. फ़ोन पे भी. और अगर कोई फ़ोन करके ये पूछना चाहता है कि ये है तो आप चेक करके अपने डाटाबेस से चेक करके बता देंगे. हम चेक करके बता देंगे. आप खुद भी चेक कर सकते हो वेबसाइट पे, और आपको फ़ोन करके पता कराना तो आप फ़ोन भी कर सकते हो. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ फ़ोन करके चेक करना है तो वो भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਰਾਜੀ, before I wrap up this show, I'll ask both of you if there is anything that I have not added. If you want to add, please do so. Chris, we'll start with you. First of all, thank you so much for your time. Thank you for coming today. But anything else that you want to add before I let you go, please do so. We've shared a lot of information with your listeners. Thank you for inviting us. And I can't stress enough that the first thing that people have to do is really check who it is that they're working with, to please contact the OSC, check your registration. That is the one thing we want them to remember, I think, from this show. Thank you. Okay, thank you so much once again for your time. And yeah, we covered a lot of things. The whole idea of today's show was to raise awareness regarding investment fraud and what Ontario Securities Commission, what OSC can do for you, how they're here. That's the whole idea of this show. राज जी, आप एनीथिंग जो मैंने नहीं ऐड किया या आई हैव नॉट आस्क्ड, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज गो ऐड.
नहीं, आपने पूरा कवर तो अच्छी तरह से कर लिया है, बस क्रिकेट की बात नहीं हुई आज, तो नेक्स्ट टाइम आप बात कर लेंगे. बट आपके लिसनर्स व्यूअर्स को बहुत थैंक यू, और थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. यू नो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके सामने आया है, जैसे क्रिस ने कहा कि आप फ़ोन कर सकते हो हमें 1877-785-1555 पे, और हमारा वेबसाइट है getsmarteraboutmoney.ca. You know, हम we cannot cover everything in the time we have, but you know, आप बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है. You know, I hope everybody takes the time to look into checking the registration of the person or firm that they're working with, and the key point is आपके खुद के पैसे हैं, आपका खुद का डिसीजन है, आपके सिवा और कोई अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता है, सिर्फ आप खुद को हेल्प कर सकते हो. ठीक है, बिल्कुल सही जी. और मैं एक बार फिर बिफोर आई लेट एवरीवन गो, तानिया जी विल कैरी ऑन द शो ऑफ कोर्स अबाउट अदर इश्यूज. आपने कहा कि क्रिकेट की बात नहीं हुई, बिल्कुल होगी जी. विल टॉक अबाउट क्रिकेट एज वेल बिकॉज टुमारो मॉर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट गेम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, टेस्ट सीरीज इज ऑन, सो विल टॉक लॉट मोर अबाउट क्रिकेट फर्दर. और कल के सुबह के शो में भी टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो विल टॉक लॉट मोर अबाउट क्रिकेट, बट टुडे वाज द टाइम टू टॉक अबाउट OSC, ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन. आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी लेनी है, नीचे मैं वेबसाइट का रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर से आप वेबसाइट भी दिखा दें, और नाल अपना जो फोन नंबर है, सो वेबसाइट और फोन नंबर ਅਸੀਂ लगातार ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਕੈਂਟਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡੂ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ OSC ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਸਰਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ. ਸੋ समय और इजाज़त नहीं देता. बिफोर वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, राज जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन शो टुडे ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर Ymedia ग्रुप. आई लाइक टू थैंक यू. Chris, pleasure having you on the show. Thank you so much for taking out time and raising this awareness. Thank you to both. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Ymedia ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ. ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ G7 ਸਮਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਇਨ ਅਦਰ 13 ਡੇਜ਼, ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ US ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਰਿਫਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ US ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੀਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ. ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ, US ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਪਲੇਇੰਗ 11 ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸ ਡੈਪੂਟੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਸ ਅਈਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ Ymedia.